they are more, they look, they when they are like in the course of communication skill, they have a lot of manners, they are quite courteous at that stage. अब आपका जो मैंने final semesters में देखा है, when you move towards your final stages, instead of becoming more polished, our students become more rowdy and rough and unethical. I don't know why you people learn this kind of behavior from the university. I know a lot of people who are settled in engineering, or they are very mannered and they are very बहुत ही खूबसूरत बोलते भी हैं. They अपने बच्चों को if I compare with them, so I cannot believe they belong to this campus, this university. When you go abroad, when you work in your multinationals, when you inshallah will be at higher level, you want not the whole university, not the whole uh, nationals, or not the whole Pakistanis are going to represent us. Only one person will give or make or break the impression of one nation. So आपको ये कोर्सेज पढ़ाने का मेन मकसद आपको राइटिंग सिखाना नहीं है. The main purpose is not to teach you about listening, reading, writing, or speaking. The main purpose is to make you more ethical, your behavior, and you to shape your conduct. You might know a lot of concepts. You might have like proficiency of a lot of skills, but you can see the screen that shows your manners, that shows your ethics. जब आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं, व्हेन यू आप उसमें कॉपी कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब अल्लाह ने आपको एक्सपोज करना होता है, आपका ऑडियो अनम्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड यू माइट नॉट इवन नो अबाउट इट, जो आपको उसको पता भी नहीं चलता. सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, बी अवेयर ऑफ योर कंडक्ट, और अपने आप को आप जितना पॉलिश करेंगे उतना ही आपके स्टेटस में एक इजाफा होगा. फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश सिस्टम, और ब्रिटिशर्स का आप अगर उनका लिटरेचर पढ़े या उनका बैकग्राउंड और कल्चर पढ़े, दे like determine the status with the language and with the level of formality. कि जितना फॉर्मल ज़्यादा होते हैं, जितने आपके मैनर्स ज़्यादा होते हैं, you belong to a higher status. The more language, the standard language you will be speaking, the more standard things, जितने उनके लॉर्ड्स और उनका वो कल्चर है. अब क्यों वहाँ से लोग भागते हैं फ्रॉम देयर रॉयल फैमिलीज? दे वांट टू गेट फ्रीडम क्यों चाहते हैं? बिकॉज दे हैव टू फॉलो सो मेनी थिंग्स, बैरियर्स, दे हैव बैरियर एट एवरी स्टेप. इसी तरह व्हेन वी विल बी डीलिंग विद आवर प्रोफेशनल लाइव्स, वी हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ बैरियर्स. हम लोगों को बहुत सारे ऐसे बैरियर्स है which we have to follow or which we have to maintain. There is some limit to everything. ये होता है एक प्रोफेशनल में और एक लेमैन में फ़र्क होता है कि जब आपको प्रोफेशनली हम आप प्रिपेयर करते हैं कि यू डू नॉट एक आप अनपढ़ इंसान की तरह. लिटरेसी, व्हाट इज लिटरेसी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी क्या होता है? एक लिटरेट पर्सन कौन होता है? To be able to behave good. Yes, to be able to behave good. Very good interpretation. और वैसे एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सी एक डेफिनेशन है, the ability to read and write. Yes, एक जो बिल्कुल कन्वेंशनल सी एक इसकी डेफिनेशन है, the ability to read and write is called literacy. But now the meaning of literacy has changed because you are no more a member of this community, Pakistani community or Punjabi community or Sindhi community. You have become a member of global market. And when it comes to international market or international community, things are not very ordinary. Things become automatically very broaden and widen because वहाँ पर आपका एबिलिटी, आपका नाम लिख लेते हैं और आप नाम पढ़ लेते हैं एक सेंटेंस. सो दिस इज नॉट इनफ फॉर टू बिकम लिटरेट नाउ. To become literate now, you have to use your critical abilities. If you listen something, if you read something, if you know something, if you write something,
You should know how to interpret that thing, how to apply your knowledge, how to analyze your knowledge, and then how to synthesize your knowledge, then how to evaluate your work, raise questions. एक आम इंसान और आप में फ़र्क ये है, एक इंजीनियर में, एक डॉक्टर में और एक आम इंसान में क्या फ़र्क है? कि एक आम इंसान might take it, absorb it and memorize it and he is not bothered कि वो उसको समझेगा भी. But आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसके बारे में then you will be raising questions and then you will, when you things are more clearer for you, then you are going to apply that knowledge in your practical life, in your routine life. I have a request, जो भी ऐसे marks लगा रहे, please clear it immediately. Otherwise, I'll mark you all absent. Clear it now. Uzair, tell them or I will not mark them, any one of you present. And I will deduct 2 marks Okay, from your ma'am. whole percentage. हर किसी के मैं 2 नंबर भी काटूंगी. Mark my words. पूरी क्लास के मैं नंबर भी काटूंगी और मैं आपकी आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगी. And I'm not going to accept this kind of childish or immature attitude in the next lecture. Otherwise, I'm not going to take your lecture in the next week. I always say, I always quote civil department. अब यहाँ से आप देखें, that is how things, your attitude, your behavior shape your impression. कि मैं हमेशा पहले कहती थी when I entered this university a few years back. So the first opportunity I got is to teach civil department. They were first semesters and I had a very good interaction with them and I had a very pleasant experience with teaching those children. Abki baar, recently, not only mine, a lot of teachers have the same complaints that the civil have a lot of students, they have a lot of attitude problem. When they do not want to complete their work, what they do is they like एक पूरा एक collaboration करते हैं और वो उसके ऊपर determined रहते हैं कि दे पूरी क्लास की एक उस पे उसको वीटो उसकी पूरी एक लेते हैं कंसेंट लेते हैं और दे बिहेव इन द सेम वे. आप और ये अभी आप देख रहे हैं कि दिस इज द थिंग व्हिच वी डू नॉट, यू डू नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इंजीनियर. क्या आप फील्ड में जाकर ये ऐसी इमेच्योर हरकतें करेंगे? यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स नाउ. ओके, हम क्या बात कर रहे थे? मैम लिटरेसी पर. साइड पे मोहम्मद अली आ रहा है नाम. इज ही डूइंग दिस? मोहम्मद अली? Yes, ma'am. मोहम्मद अली इज डूइंग इट. उज़ैर? मैम वो नाम आई थिंक मैंने अभी देखा नहीं किसी का आ रहा है, यानी मे बी अगर सामने आता तो फिर वही लगा होगा. इसलिए मोहम्मद अली का नाम आ रहा है साइट पर. सो आप इसका नाम नोट डाउन करें और वो जो बच्चा पहले भी था उसका भी नोट, डिसिप्लिन, इसका जो डिसिप्लिन का इनका इशू है, इन दोनों का नाम लिखकर मुझे प्लीज आप सेंड करना. ओके मैम. ओके जी. So can anyone give me a quick recap of the last lecture because वो थोड़ा सा कनेक्शन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे आपको डील कर रहे होते हैं हम. Excuse me, ma'am. जी मैम मैं मोहम्मद अली, मैंने तो क्लास अभी ज्वाइन की है. अच्छा. जी मैम. मुझे साइड पता पे नहीं. स्क्रीन बार पे आपका नाम आ रहा है और No, एक ma'am. रेड उसके डॉट के साथ. यू कैन सी द स्क्रीन. यहाँ पे आप मेरे आप देख रहे हैं एरो, यहाँ पे भी आपका ही नाम था. दैट शोज ma'am. दैट यू वर डूइंग सम कारस्तानी और माइट मे No, बी. मैम मैं तो अभी बाहर से आया, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है. ओके. Yes, ma'am. Okay, thank you. कैन एनीवन गिव मी अ क्विक रिकैप व्हाट Yes, वी ma'am. डिस्कस्ड? जी Ma'am, first we studied about some skills including language skills and productive and receptive skills. Then we studied about what is technical writing and why it is important for us.
for engineers. Then we studied about what is difference between fluency and accuracy, and in the end we studied about what is the main difference between technical writing and academic writing. Okay. So, it is very important to you that you should know the difference between the different genres of writing. We cannot say the other writings are not standard. अभी मेरे बच्चों ने एक पेपर लिया है, हमने उनका summative paper लेना पड़ा है. And when we ask them about the differences from technical writing and other forms of writing, they said these writings are not formal. They do not follow any rules, and no, they are not standard. We cannot say that the other forms of writing are not. Kindly mute your audio, please. Actually, मुझे इसको deal करना नहीं है. Ma'am, I think मैम it will be वो असल में मैम शायद सम स्टूडेंट्स जो है ना वो लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं तो वो कुछ दूसरे क्लास So you can this is very private meeting, तो आपको उसको link forward within your group करना चाहिए, not outside your group. आप अपना technical report writing का group बना लें, और I will ask you when I will create MS Teams, आप उसमें बेशक मुझे भी ऐड कर लीजिएगा. So we can. मैम वो असल में ना हम ग्रुप में ही करते हैं, लेकिन बच्चे उधर से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी क्योंकि क्लास के बच्चों में से ही कोई आगे कर देता है, तो इस वजह से फिर मसला हो जाता है. Okay. Actually teachers जो होते हैं ना, what they do is उनका एक बड़ा एक limited सा mindset होता है कि वो जब अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं ना, they think that all of his or her students are perfect. Believe you me कि I am always, जब अभी मैं अपने results बना रही थी, I do not have a very good experience. बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट जब उनके नंबर काटती हूँ ना, बिलीव मी, मुझे इतना दुख होता है कि sometimes I give them number based on that, thinking they are quite good, or I don't know, there might be some issue with them, or there might be some reason they might not be able to perform that way. So teachers को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा expectations, I don't know why. I try to tell myself कि all students are not same, but एक वो आप एक बना होता है कि नहीं हमने इनको इस तरह पढ़ा, they should be like this. इनकी जो कुछ चीज़ें हैं basics, that should be similar, or that should be at same level, because जब हम इनको यहाँ से निकाल के भेजेंगे by practically fields में, we want them very perfect. कि लोग कहें कि they have a very good training or things like that. अच्छा जी, अभी क्या बात हो रही थी? So what is the difference between technical writing? ये basic thing है, और हमें इसके बारे में बहुत clear होना चाहिए कि why technical writing is different from other genres of writing. We cannot say that these writings are not formal, they are not standard, they do not have any principle, or they do not have any limit. Every writing has some rules and regulations. It varied from writing to writing. So for instance, about academic writing, you also conduct research, you write essays. They are also part of academic writing, which is very much similar to report writing. But हमारा audience फर्क है. हम लोग अक्सर कहते हैं ना, वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी, when we were young, we were children, we do not have to study, we do not have to. जब आप बड़े हो जाएंगे ना, और थोड़े से जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपका प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, तब आप कहेंगे वो दिन कितने अच्छे थे. वी जस्ट हैव टू, हम तब पढ़ाई से जान छुड़वाते थे. वी हैव सो मैनी थिंग्स टू परफॉर्म नाउ, और आपको ये दिन याद आया करें. इसी तरह, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ है, इसी तरह टेक्निकल राइटिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिकल. यू आर नॉट फ्री. अब आपके ऐसे राइटिंग है, you are free to write at that level, at your university level, school level. जब आपका पेपर होता है, you can write, you could be like corrected, but यहाँ पर आपका एक किससे image नहीं disturb होता. But when it comes to profession, it can disturb your image. It can raise question on your personality and your training. So that is why we avoid mistakes. We want to be perfect in this thing. So
this is the main difference. The purpose of writing is different. The audience is different. There are so many differences here. Uh, uh, Academic writing may deal with your academic setup, researchers, a lot of other things. Whereas in your professional life, you are dealing with technicalities and your practical things and your professional things every day. At every moment, आप इसको deal कर रहे हैं. Creative writing. For instance, in technical writing, you write letters, reports, instructions, brochures, your CVs, your web pages, flyers, PowerPoint presentations, your lab reports. There are so many other things. But in एक academic writing होगी नहीं, next is your creative writing, and next is your literature. जल्दी से आपको literature का बता देती हूँ. That literature depicts your culture, later depicts your identity. So that is a different thing. वो एक different writing है. You can write pages and pages for that. But in your field, you do not. Your audience is very limited. You have to determine, you have to identify the audience. आप जब writing करेंगे, for instance, ये ज़रूरी नहीं कि आप engineer हैं और you do not have any interest in other genres of writing. You might love to write poetry. You might like to write some creative things. अब यहाँ पर क्या होता है, कई दफ़ा आप जब vocabulary सीख रहे होते हैं और आप जब चीज़ें we learn things, we employ those things in our writing, we make it so difficult कि वो आप you do not bother कि आपका audience कौन है. They might not have that much skill to understand it. They have to consult dictionary to know the meaning of most of the words. So that is not right, because your technical audience do not have that much time. अगर आप किसी चीज़ की instructions लिख रहे हैं अपने product की, अगर वो इतनी मुश्किल है to follow, तो that is not a successful piece of writing. Because आपका जो customer है, they will avoid that thing कि जिसकी बात ही आपको assemble करना ही नहीं समझ आ रहा, आपको उसको operate करना नहीं आ रहा, आपको उसको use करना नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, तो you need a technical person to like complete that task. So creative writing, you are not bound to such things. In essays, you are not bound to write such thing unless and until you are prescribed to some word limit or something like that. Creative writing needs emotions. It like take your reader into that setting. उसकी खूबसूरती यही होती है. I have written something. I just, for instance, you can say Harry Potter. जब आप उसको देखते हैं तो you go into that world. You assume, you feel like that you are a wizard and everything will work like this. ऐसा ही है ना? You use a lot of stylistic devices. Stylistic devices means just literary devices होते हैं. Like you can say similes, metaphors, foregrounded, alliteration, repetition, rhythm, rhymes. So many techniques of writing you employ in that kind of writing. I have taught literature recently and I really enjoyed it. I will show you my slides of literature. You can see the difference of slides of other linguistics or this field or literature. I made it so colorful automatically. I was convinced कि मैंने इसको colorful बनाना है, keeping in view the nature of the subject of the course. So when you talk about creativity, when you talk about these things, literature, automatically आपके ज़हन में आपकी colorful चीज़ आ जाती है. It's a general or very common notion that science students are not creative. They are very mechanical. They are like very robotic type होते हैं. They lack emotions, whereas it is not right. I know a lot of students who are very creative along with their professional education. They love a lot of other things. They love nature. They love writing. They love a lot of other creative or aesthetic. They have aesthetic sense also. तो ये तो बात पहले ही गलत है. So in your technical writing, on technical field,
you do, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही practical इंसान है, क्यों कहते हैं? आपने कभी सुनी बात अगर किसी का भी तुम तो बहुत ही practical हो? Have you ever heard this statement? क्यों कहते हैं? Practical, business and profession, they do not allow emotions. They do, जैसे for instance कि आप किसी को पैसे देते हैं और आप उसे हिसाब नहीं करते, नहीं छोड़ो भाई, नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उसको. But in your, when it comes to practical principle, you have to do it. वहाँ पर आपके अगर आपके अपनी family भी है, but you do is you have to deal with the professionalism. वहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी मोहब्बत, आपकी इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है. आपकी दिस इज द थिंग व्हिच डील्स विद योर टेक्निकल लाइफ इवन. ठीक है? कैन एनीवन रीड दिस स्लाइड? टेक्निकल राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव. यस Yes, मैम. ma'am. जी. Technical writing lacks the emotional impact. Technical writing avoids use of rich metaphors and figures of speech. Typically, sentence structures are simple and direct. Technical writing is precise, objective, direct, and clearly defined. ठीक है? So we need to do it. What we need to do is कि we have to be, even not in writing, in your communication. The purpose is that we communicate our message effectively and successfully. So therefore, what we need to do is we might be dealing with multiple audiences. Our audience might be having a lot of knowledge about our field, but my audience might not have that much knowledge. For instance, as an if we talk about engineering field, even I am teaching to engineers, mashallah, but I do not know a lot of things, but I have learned a lot of things from my students. For instance, जैसे हम लोग क्विज करते थे, तो हम जब कभी क्विज को चेक करते थे, they used to say that the answer of the first item is alpha, second is bravo, Charlie, delta, beta, ऐसे ही है ना. So I really enjoyed it. I have learned a lot of things from you people. So मुझे इस चीज़ में कोई ऐसे महसूस नहीं होता है कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट्स से सीखा है. And I quote you all, जब कभी भी when we sit together, अब colleagues में भी, तो I quote this thing कि I have also learned from them. जैसे मैंने literature पढ़ाते, I have learned from them. So it's a constant process. But the beauty, the essence of technical writing is you need to be very simple. आपको लगी चुपड़ी बातें नहीं करनी, आपको उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, ड्रामा की तरह, स्टोरीज की तरह, फिक्शन की तरह. You do not, your aim is not to confuse your reader. Your aim is not to create suspense or to make them wait them till the next episode. No. Your writing should be precise, clear, objective, direct, and correct, comprehensible. There are 7 C's of communication. Do you remember that? आपको याद है 7 C's of your communication? पढ़ा है आपने 7 C's of your communication? No? Anyone, No, ma'am. someone? Okay, मैम पढ़ा था. 7 C's of communication is... मैम अच्छा. यस मैम पढ़ा था. पढ़ा था मैम. Okay. मैम इसमें क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, यही है मैम. जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही. Coherent, it's coherent. Coherent yes. means connected. For instance, अगर आप अभी एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं about the background and then the next paragraph you mention the conclusion, so would it be coherent? अभी आप एक टॉपिक के बैकग्राउंड का बता रहे हैं कि एक बच्चा है, फॉर इंस्टेंस स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं, एक बच्चा है, he belong to a poor family and he started his struggle, और एंड पर आपको दिखा रहे कि बच्चा जो है ना he died. तो बीच वाला पार्ट कहाँ गया? So coherence means connection. You have to build connection with the previous knowledge. जैसे हम अभी बात करते हैं, I have started interacting with you, like connecting your knowledge with the communication skills, because
there should be a connection. Communication skills का इसके साथ connection इसलिए है कि they both of them are dealing with the productive skills. That is your oral skill, that this is your written skills. So they have a very strong connection between each other amongst them. So इसलिए connection is very important. When you write any piece of, you want to develop or create any piece of writing, there should be a connection. It should be correct. जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि we have no room for, no space for errors. It should be very standard. And this, एक और आपको पहले ही step पे बता दूं, this technical writing or your research writing is the kind of writing which, if you will consult your क्या कहते हैं internet और ये जो आपकी Google पे आपके पास information है, you might be finding a lot of styles and formats and structures. But what you have to do is you have to follow the structure which your instructor is instructing you or telling you or giving you. Because उसमें हम लोग confused नहीं होना चाहते. Obviously, we have gone through a lot of material और उसमें से हम आपके लिए choose करते हैं to prepare you. तो आपने जो right left को follow नहीं करना, you just follow the things which I am telling you at the moment. आगे जाकर जैसे मैंने आपके लिए I have searched a lot of things, or I have jot down, or I have shot it down और उसको थोड़ा सा कम करके उसको स्क्वीज करके उसमें से अच्छे एक सिस्टमैटिक अपनी तरफ से एक उसको बनाया है उसको फॉलो करने के लिए. सो फॉलो दैट. अच्छा जी, कैन एनीवन रीड इट? अभी अगर ये खत्म हो जाए, एक्सक्यूज मी, कैन यू हियर मी? यस मैम. अगर ये अगर ये खत्म हो जाए तो आपने इसको रीजॉइन करना है, बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम. ओके मैम. ओके जी. सो लिटरेचर, read it please. Technical writing is not literature. It is neither prose, which recounts the fictional tales of a character, nor poetry, which express deeply. Just a moment please. Just a moment please. मुझे एक कॉल लेनी है. Hello. Please. Technical writing is not literature. It is neither prose, which recounts the fictional tales of character, nor poetry, which express deeply felt universal emotions through smiles and metaphors. Technical writing is neither an expressive essay narrating an occurrence nor an expository essay analyzing a topic. Technical writing is not a journalism. अब आप देखें कि what is the जी please. मैम कर लें आप बात. In literature, your aim is to literature is a very effective. It's an effective form of writing, which make other people to involve in your culture, to teach them about your culture, to make them familiar. और ये इसी वजह से it is very important also. But हमारे यहाँ पे in technical writing we have not that aim. Our objective is different. हमने daily routine में we have to interact amongst each other, amongst our professionals, हमारे vendors, हमारे managers, हमारे stakeholders. We have to deal with them. और उसको हमारा ये aiming है to tell them about the other things. We have to be very focused कि किस चीज़ हमारा aim क्या है for that specific interaction. Literature that involves emotions, incidents, your क्या कहना चाहिए, your tales that might be exaggerated, or exaggeration is nothing to do here in technical fields. Expressions होते हैं which might be outdated. एक तो बार-बार याद आते हैं तो just एक वो टेम्पो खराब हो जाता है.
So that is not that is a completely a different field. Again, journalism is completely a different field. But whenever I suggest someone, I always suggest people to read newspapers, to listen to the news, because yeah, that is a very good technique to make your language skills better. You listen, or there are some expressions which are used in these fields can be very useful, and it can be a good training. In journalism, you need to exaggerate. You learn to exaggerate things. But when it comes to your professional life, you are not allowed to exaggerate things. You have to tell the audience what the things are exactly. You have the जो उसकी एग्जैक्ट उसकी फॉर्म है, पिक्चर है. अगर आप exaggerate करेंगे, then people will be your customers, and your other people will like expect the same thing from you. So you have no time to exaggerate things. You have no time to play with the emotions of the people. You have no time to uh, make people impressed from your culture, or your identity, or your. You just need to have professional interaction. So you do not have to employ your. अभी देखिए, अभी तक बच्चे आए जा रहे हैं. It's so distracting. I don't know how to deal with it. I'm sure कि उसमें नहीं होगा. मैं MST में हमारे issue नहीं आएगा. Can you hear me? Time तो नहीं खत्म हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So please read it. Technical writing requires a strong foundation in general writing, including knowledge of common grammar and punctuation conventions. The process is iterative and involves multiple reviews and revision prior to publication. So technical writing is it means your basics should be very strong. If you have like not you are not in touch with the grammar or punctuation, and you do not bother, because मैंने आप लोग के भी recently lab reports पढ़ी हैं. So उस पे मैंने नोट किया है कि जब आप अपनी फॉर इंस्टेंस आपका टेबल और ग्राफ्स को जब आप मेंशन करते हैं, यू डू नॉट बॉदर टू राइट स्टेटमेंट. यू डू नॉट बॉदर टू राइट इट. अगर आपने लिख भी दिया है तो मेक इट मोर क्लियर. और अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन in this field, so it takes a lot of time to understand, to know how to know about different things, specifications, और इसको check करने के लिए. उसके लिए you need to write statements. You need to follow some rules and regulations. अब आप जब अपने flow में लिख रहे होते हैं, आप क्या करते हैं? You take some material from somewhere, और आपके पास जो आपके एक वो format तैयार मिलता है आपको, you keep on like copying it and pasting it. आप उसको इवन दो मैं समझती हूँ कि इफ यू कॉपी एंड पेस्ट थिंग्स, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है. आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट लर्निंग इट. बट यहाँ पर बिकॉज यू डू नॉट पे अटेंशन, दिस इज नॉट योर एम, और आपको लगता है कि दीज आर ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स और चीज़ें हैं, तो आप उसको उस तरह फॉलो नहीं करते. Whereas you should do it, and you need to make your basics fundamentals strong by knowing the about punctuation, mechanics of other different mechanics of language, grammar, and how to arrange that structure, how to structure that information, how to make it more clear. In order to make it more clear, how to employ all these mechanics of language. Excuse me. So it is very sensitive, and it involves a lot of technicalities. It involves a lot of information, and that makes you more efficient in designing a technical document. Technical writing is direct, informative, clear, and concise language written specifically for an identified audience. The content must be accurate and complete with no exaggeration. To deliver the intended message,
The text must be objective and persuasive without argumentative. अब आप देखें कि if I'll say, if I'll read it or write it like this, technical writing is direct, informative, clear, concise, written specifically for an audience. Then content must be accurate, complete with no exaggeration to deliver the intended message. The text must be objective. So would it be easier for you to understand? On Friday हमारी class है at what time? Ma'am, first 2 lectures. First 2 lectures. By Friday, inshallah, I'll make your teams on MS. So I have some laptop issues की वजह से ना ये सारा ही आ रहा है. Otherwise, it is very inconvenient for me. I don't know anything about it. ये जो है ना Zoom. What do you prefer, Zoom or MS? Yeah, so आपको Zoom ही करते हैं. MS Teams. MS Team ठीक है. I'm happy कि otherwise इस lecture थोड़ी देर का होता तो I thought कि आप लोग इसको enjoy करते हैं. Anyways, so जो भी अभी हमने पढ़ा है, do you have any question regarding that? मैम slide send कर दीजिएगा kindly. This is the question. Otherwise, now you can basic difference technical writing का क्या है from other writings. Basic, which makes it different from the rest of the styles of writing. Someone, and you please tell tell you इसमें हम पहले आप सुन लें कि जब आप मुझे जब whenever you participate in the class, kindly tell me your name before that ताकि ये आपकी participation will be useful for you at the end. आपकी participation has extra marks, और जहाँ पर कभी आपकी कोई कमी रह जाती, then I consult the names of those who kept on participating and interacting. वो जब एक आधा नंबर रह जाता है या 2 नंबर या 3 नंबर, so I add your marks there. So kindly tell me your name. मैम मोहम्मद अली. मोहम्मद अली. Yes मैम. Notorious मोहम्मद अली, जिसको मैं समझती हूँ उसने स्क्रीन पे लाइनें लगाई हैं. मैम मैंने तो क्लास लेट ये मुझे पता ही नहीं है. अच्छा, वेरी गुड. आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सीआर कौन था? मैम सीआर फिदा हुसैन. फिदा हुसैन? Yes मैम. Is he still a part of your class? Yes ma'am. फिदा, where are you? मैम मैं घर में. Obviously आपने घर में ही होना है, but आपको क्या कहते हैं, are you understanding or are you comprehending what we are discussing? Yes ma'am. Good. अच्छा जी. So अभी कौन बता रहा था? There was someone who was sharing something. Yes ma'am. मैं ये कह रहा था कि इस टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में हम ना पहले रीडर को जज करते हैं कि उसका वो लेवल क्या है, लेवल ऑफ माइंड. Very good. Requirements क्या? This is Rehan Khan. So Rehan is very much right. First of all, we should know what is the purpose and who is the reader or who is the audience. Obviously, उसके मुताबिक हम लोग अपनी in every writing, it is very important. Even when you design some story, उसमें भी it is very important which strata of the society or section or age group you are going to deal with. So similarly, in technical writing, it is very important to know your audience, who are they and what they expect from you. So that's all for today, and we will be starting from here, and I will share my slides with you. बल्कि MS पे तो मैं आपके reading material में I'll keep on updating. तो इसमें मैं मुझे I don't know where to update it or where to send it. मैं आपको वैसे भी उज़ैर को I'll send it today. ठीक है? Okay. आपने attendance ले लिया इनकी? Yes मैम, वो मैं screenshots ले रहा हूँ तो उधर से लगा लूँगा. Okay. Thank you very much. जी. Any question? मेरा सेक्शन डी था, मेरा पिछले लेक्चर ले गया 8 बजे था हमारा, तो इसलिए मैंने 9 बजे वाला ज्वाइन किया है. मेरे अटेंडेंस आप मार्क कर दें प्लीज. अच्छा 183 और रेहान, you are from second D.
यस सर, ओके यस मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। आप मुझे मैसेज भेज देना या उसको भेज देना मैसेज, मार्क को। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।